Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. Today we will discuss what are the tuples in Python, how we can see tuples are immutables, how we can create and access tuples, and what are the nested tuples. Now we will discuss these topics in detail one by one. Now let's start. First is what are tuples. In Python, tuples are the sequences that can be used to store a tuple of values of any type. Any type means we can store a value of integer, a value of floating point, a value of string, a value of list, or even a value of tuple also. Okay, and next is tuples are immutable. Immutable is non-modifiable. That is, you can't change the elements of a tuple in place. In place means same memory locations. We can't change the elements of a tuple in same memory locations. When we make changes to an element of a tuple, then Python will create a new tuple. And next is tuple elements are separated by commas within the round brackets, and these round brackets are also known as parentheses. And you should remember this: if parenthesis is not given with a sequence, if parenthesis is not given with a sequence, then it is by default treated as a tuple. Now understand this practically also. Suppose I am taking a variable t. Now I am using assignment operator, and now I am writing some values within round brackets and separated by commas. Now this becomes a tuple, and this tuple मैंने किसमें assign की है? Variable t में. Now t कैसा variable हो गया? Now t becomes a tuple variable. Okay. If I display t, then it will display a tuple having 3 elements, 1, 2, and 3, and these 3 elements are of integer type. If I want to check the type of t, then use the type function. Type of t क्या होगा बेटा? Tuple. Is a tuple type. If I am using some values separated by commas, ये मैंने क्या लिया है? कुछ values ली हैं but separated by commas. This time I am not using parentheses. Okay. This time I am not using parentheses. तो ये कैसे treat होंगी? ये values treat होंगी as a tuple. If I display t, then it will display a tuple having these 3 values 2, 3, and 4 separated by commas. If I check the type of t, then it will give the output. It is a tuple. This time I am using a and b, और इसमें मैं क्या values assign कर रही हूँ? 2, 3. Here if I want to check the value of a, then a में क्या है? 2. If I check the type of a, तो ये क्या होगा? Integer. Okay. If I check p, p में क्या है? 3 है value. Type of p भी क्या होगा बेटा? Integer. That means when we use sequence of values, ठीक है? When I am assigning sequence of values within a single variable, then these values are treated as a tuple. This sequence is treated as a tuple. If I am using this statement, okay, in left hand side there are 2 variables. So this is not a tuple. If I am assigning a sequence of values within a single variable, like this is the single variable t, and I am assigning a sequence. Okay, and all these values are separated by commas. तो t कैसा variable हो गया? Tuple. But here sequence of values तो है, but मैं किसमें assign कर रही हूँ? Within 2 variables, not a single variable. इसमें क्या हो रहा है? जो आपकी corresponding values हैं वो किसमें assign हो रही है? Corresponding variables में. That means first value assign होगी first variable के अंदर, और second value assign होगी second variable के अंदर. If I am using a, b, and c, if I am using 3 variables and
on right hand side I am using 3 values, then these 3 values are assigning to the corresponding variable. First value किसमें assign होगी? First में. Second value will be assigned to the second variable and third value will be assigned to the third variable. If I am using the same but this time I am using single variable on left hand side, तो ये क्या हो जाएगी sequence? It becomes a tuple like this. Okay. Now next is, there are some examples. First is a empty tuple, because there is no element within the round bracket, so it is an empty tuple. Next one is, here two elements and these two elements are of integer type, so it is a tuple of integers. टपल ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब है? इसमें जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे टपल के अंदर वो सिर्फ इंटीजर्स होंगे. ओके, अदर देन इंटीजर्स कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर, ओनली क्या होंगे? इंटीजर्स. सो इट इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट इज, दिस इज अ tuple of numbers. Number means it can be an integer or it can be a float. Here are 3 elements in which first element of integer type and last 2 elements कैसे हैं? Are float type. And this is a tuple of characters. You should remember there is no separate data type, character data type in Python. Okay, Python में कोई separate character data type नहीं है. Characters क्या हैं? Characters are the string only with a single characters. Next one is tuple of strings. Strings क्या हैं? Strings are the sequence of characters so within the quotes. All the characters किसमें enclosed है? Within the quotes. So this is a string and there are 3 strings, red, green and yellow. Next is, in this tuple you can see here there are different types of values are stored. First one is a character, next 1 and 6 both are of integer types, 4.5 is a floating type and 0 is a string type. So this is a tuple of mixed values type. Next one is how we can see tuples are immutable. T क्या है? T is a variable and now I am assigning this tuple to the variable T. मैं क्या कर रही हूँ? ये वाली जो टपल है असाइन कर रही हूँ टी में. ठीक है, 1, 3 एंड 5 एलिमेंट्स इस टपल के अंदर एंड दिस टपल इज असाइन टू द वेरिएबल टी. नाउ चेक द आईडी ऑफ टी. आईडी क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है. इट रिटर्न्स द मेमोरी लोकेशन वेयर द टपल टी इज स्टोर्ड. ये टपल कहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में? इट विल टेल बाय द आईडी बिल्ट इन फंक्शन. दिस इज द memory location of the tuple t. Now I am trying to change the value of tuple t at the index 0. अभी क्या वैल्यू है इस इंडेक्स पे? 1. Now I am changing this value to 11. इंडेक्स 0 पे वैल्यू है उस पर क्या चेंज कर दें? 11. But it will give the type error. Tuple object does not support item assignment. That means we can't change the elements of a tuple in place. That means we can't change the element of a tuple in place. That means tuples are non-modifiable. We can't modify the tuple. If we want to change the tuple, then we will have to create the new tuple. T equals to 11, 3 and 5. Now this is the tuple, but this time I have changed 2 values at index 0 and no, only one values are changed. At index 0 पे मैंने क्या पुट किया है? 11. ठीक है, but this time t कैसी है? अब t बन गया एक न्यू टपल. Now check the id of t. This time the id of t is different from the previous one. कोई both the ids क्या हैं? Different हैं. First id and second id, both id are different. That means both the tuples are different. When we make the changes to an element of a tuple, then Python will create a new tuple. Let's do practically also. If I am taking a tuple having 3 elements
Now check the ID of this. This is the ID, and this ID may be different for the different systems. In this ID, you will get different ID in your system. Next one is, if I'm changing value at index 1, now I'm changing 2, value 2 को क्या change कर रही हूँ 22, it will give the type error, tuple object does not support item assignment. Okay, now I'm changing some values, it will create, मैंने क्या किया तीनों values को change कर दिया है ना, p वेरिएबल है बट नाउ इस टप्पल में मैंने क्या किया सारी वैल्यूज को चेंज कर दिया, या सपोज मैं एक ही वैल्यू को चेंज करती हूँ 2, 2 एंड 3, ओनली वन एलिमेंट को मैंने चेंज किया है. नाउ चेक द आईडी ऑफ दिस टाइम यू विल गेट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन where the t is stored. Now you will get the different memory location from the previous one. That means we can't change the element of a tuple in place. If we want to make some changes to a tuple, then Python will create a new tuple. Next one is creating tuples. Now this is the syntax to create a tuple. Tuple name, assignment operator, then all the values are placed within the round brackets and separated by comma. And if we want to create an empty tuple, then we use this syntax: tuple name, assignment operator, then round brackets without any value. This syntax will create empty tuple, and this is another syntax to create empty tuple: tuple name, assignment operator, and then tuple method without any argument. These two syntax are used to create empty tuple. Now let's do this practically also. Here I am using a variable t. Now I am putting all the values separated by a comma within the square brackets. Now t कैसा variable है? Tuple variable. Values of t is displayed. Now we can check the type of t, and it will display it is a tuple. If we want to create an empty tuple, then we can assign round brackets without any value to a variable, then it will create a empty tuple. And this is the another method to create a tuple. अब हम क्या असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में? tuple method. tuple method क्या करेगा? tuple method यूज कर रहे हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. दिस tuple method will create a empty list, empty tuple. This tuple method क्या करेगा? It will create an empty tuple, and this tuple will be assigned to the variable t. Now see the value of t. t क्या है? empty tuple. Tuple method ने क्या किया? It will create an empty tuple, and that empty tuple is assigned to the variable t. And if we display the t, then it will display the empty tuple. Next one is single element tuple. To make a tuple with one element, just add a comma after the single element. Here you can see t is a variable, and I am assigning 5 comma. Here I am writing 5 comma. That means it is a sequence. Now t कैसे variable हो गया? t is a tuple variable with single element. Okay. Now check the type of t, class या इसकी tuple. Now second method is to create a tuple with single element is tuple name, assignment operator, then put the brackets. इसमें क्या था? हमने parenthesis नहीं लिखी, नहीं टाइप की है. यहाँ पे मैंने parenthesis पुट नहीं किया है. When ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. When we
don't put the parenthesis with the sequence, then the sequence is treated as a tuple. But here I am putting the parenthesis also. Now this is another method to create a tuple with single element. Now let's do this practically also. If I am assigning a value 4, here I am not putting the comma after 4, so it is treated as integer, not a tuple. Now check the value of t. This is the integer value 4. Now check the type of t. This is a integer. But if I am putting the comma here, अब ये क्या बन गई? अब ये बन गई sequence. ठीक है? When we don't put the parenthesis with the sequence, then this sequence is treated as tuple. Now t is a tuple. We can display here, and we can check the type of t also. And this is a tuple. And second method क्या है? Now we are putting brackets, parenthesis also. Now t is also a tuple. Check the type of t. It is a tuple. So there are two methods to create a tuple with single element. First one is assign a single element and put the comma. Okay, and after the value put the comma here. So it is treated as a tuple. And second is put the elements and after that put the comma and place within the round brackets. This is the second method to create a tuple. First one is this and second one is this. If you are assigning this 4 without any comma, so it is treated as a integer. Okay. Now next one is long tuples. If a tuple contains so many elements, then हम क्या करेंगे? Then to enter such long tuples, we can split it across several lines. इसमें हमने क्या किया है? देखो हमने कंप्लीट लाइन में टाइप नहीं किया है सभी वैल्यूज को. पहले हमने कुछ वैल्यूज को टाइप किया. आफ्टर 78 पुट द कॉमा, फिर आफ्टर हमने क्या किया है? एंटर प्रेस किया है. नाउ 645 के बाद कॉमा, फिर कॉमा के बाद फिर एंटर प्रेस किया है. दैट मीन्स हमने सारी वैल्यूज को क्या किया है? 3 लाइन्स में स्प्लिट कर दिया. एक लाइन में ना लिख के उनको 3 लाइन्स में स्प्लिट कर दिया. व्हेन वी गिव दिस टाइप ऑफ वैल्यूज टू अ वेरिएबल, to a tuple variable, then a tuple becomes a long tuples. Okay, if a tuple contains such type of values in this manner, then it is called a long tuple. And next one is nested tuple. A tuple can have an element in it which itself is a tuple. Such a tuple is called nested tuple. You can see here t क्या है? T is a variable and we are assigning this tuple to a t. But this time we are putting an element as a tuple. हम क्या कर रहे हैं? इस टपल के अंदर एक एलिमेंट कैसे ले रहे हैं? एज अ टपल. देखो 1, 3 एंड 8 आर ऑफ इंटीजर टाइप्स, बट 5 एंड 7 ये कैसी है? पूरी एक टपल है. नाउ टी कैसी टपल होगी? अब नेस्टेड टपल. नाउ टी बिकम्स अ nested tuple because t consists an element which is itself a tuple. See here, t is a tuple having 4 elements in which 5 and 7 consider as a one element. Now length of t कितनी होगी? 4, 1, 2. This is considered as 1, so it is 3. Next one is 4. Now length of t कितना हो गया? 4. And if we access t of 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 3. ओके, 3 हेयर. इफ आई एम राइटिंग t of 2, देखो t of 2 पे क्या एक्सेस होगा बेटा? ये वाला एलिमेंट, कंप्लीट एलिमेंट 5 एंड 7. ये क्या है? टपल 5 एंड 7. इफ वी वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू 4, दिस वैल्यू 5 है ना. इफ वी वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू 5, तो मुझे क्या करना होगा? इसको एक्सेस करने के लिए पहले इस टपल को एक्सेस करना होगा, देन इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है इस टपल के इंडेक्स पे उसको एक्सेस करना होगा. दैट मीन्स मुझे 2 इंडेक्स यूज करने होंगे. फर्स्ट इस कंप्लीट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, आफ्टर दैट इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. तो t of 2, ये एलिमेंट क्या है? t
के सेकंड इंडेक्स पे 0, 1 एंड 2। टी के सेकंड इंडेक्स पे तो ये वैल्यू मिल जाएगी एंड 5 कौन से इंडेक्स पे है, इसके टप्पल के 0th इंडेक्स पे, तो टी ऑफ 2 फिर ऑफ 0, तो क्या वी विल गेट 5। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली आल्सो। नाउ आई एम टेकिंग a tuple 3 and 4, 5, 6, 7, next is 8। here I am taking 5 element, है ना। लेंथ ऑफ टी कितनी आ जाएगी 5, because this element is considered as a one element because it is a tuple। okay, टी कैसी tuple होगी, nested tuple, because it consists one element as a tuple element। now if we want to access t of 2, then we will get 3 at index 2 पे क्या वैल्यू है 3। if we want to access this element तो हमें क्या लिखना होगा बेटा, t of 3। t के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, tuple 5, 6, 7। tuples having elements 5, 6, 7। if we want to access this value 6, तो मुझे क्या करना होगा, पहले ये टप्पल एक्सेस करनी होगी एंड आफ्टर दैट ये एलिमेंट एक्सेस करना होगा। तो t ऑफ 3 मैं लिखती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देन आई विल गेट दिस टप्पल। अब मुझे क्या करना है, 6 को एक्सेस करना है। 6 को एक्सेस करने के लिए क्या करूंगी, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है इसका, ये 2 इंडेक्स है, तो ये 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एक्सेस करनी है 6, तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, इंडेक्स 1। ओके, नाउ I will get value 6। next one is creating tuples from existing sequences। Python क्या करती है, in Python creates the individual elements of the tuple from the individual elements of the past sequence। हमें क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है, हमें सीक्वेंस ही क्या बनानी है, tuple। now this is the syntax of creating tuples from the existing sequence। here we are using tuple method, this is the tuple name, this is the tuple method, और हम इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, a user defined sequence। this sequence can be a list, can be a string, can be a tuple also। now see here tuple method, और इसमें हमने क्या पास किया है, a sequence as a string। स्ट्रिंग को हम पास कर रहे हैं एज ए सीक्वेंस। नाउ टपल मेथड क्या करेगा, इट विल मेक द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, क्या बना देगा उसको, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। नाउ y will be the second element of the tuple and t will be the third element of the tuple and h will be the fourth element of the tuple and o next एलिमेंट ऑफ द टपल हो जाएगा एंड n विल बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। इसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन पिक किया और उसे क्या बना दिया, इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द टपल। नेक्स्ट वन इज टपल मेथड में हम क्या पास कर रहे हैं, नाउ आई एम पासिंग, दिस इज अ लिस्ट हैविंग 4 एलिमेंट्स। अब ये टपल मेथड क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है लिस्ट का 1, इसको इसने क्या बना दिया, टपल का फर्स्ट एलिमेंट। नाउ 2 विल बी द सेकंड एलिमेंट ऑफ द टपल, 3 विल बी द थर्ड एलिमेंट ऑफ द टपल एंड 5 विल बी द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द टपल। ओके, हियर आई एम पासिंग अगेन अ लिस्ट, बट दिस टाइम आई एम पासिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। देखो यहाँ पे पाइथन क्या था, यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग थी, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस जो थी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस तो लिस्ट है, बट जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो कैसी है, ये स्ट्रिंग। क्लियर, यहाँ पे सीक्वेंस स्ट्रिंग है, इस केस में जब हम टप्पल में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो सीक्वेंस लिस्ट है, बट जो लिस्ट का एलिमेंट है वो क्या है, स्ट्रिंग। नाउ अब ये पी वाई टी को नहीं बनाएगा अलग अलग एलिमेंट, अब टप्पल मेथड क्या करेगा, जो कंप्लीट एलिमेंट है लिस्ट का, दिस वन, जो कंप्लीट एलिमेंट है लिस्ट का, दिस स्ट्रिंग पाइथन, इसको क्या बना देगा, कंप्लीट वन एलिमेंट ऑफ द टपल। नेक्स्ट जो ये कंप्लीट सेकंड एलिमेंट है लिस्ट का, उसको क्या बना देगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द टपल।
क्लियर। नेक्स्ट इज, अब हम टपल में क्या पास कर रहे हैं, नाउ आई एम पासिंग अ टपल एज अ सीक्वेंस। अब टपल मेथड क्या करेगा, व्हेन वी पास एन अनदर टपल, when we pass another tuple then the tuple functions make a copy। अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं बनाएगा टपल का, ठीक है। टू को टू, फिर आप टू को एलिमेंट को पिक करेगा, फिर टू एलिमेंट नहीं रखेगा टपल में, फिर थ्री को पिक करना है, देन थ्री विल बी सेकंड एलिमेंट ऑफ टपल। नो, अब ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट द कॉपी ऑफ दिस टपल। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो। सपोज आई एम टेकिंग a variable t, now I am passing a string hello। अब ये क्या करेगा, मैंने क्या पास की है, स्ट्रिंग पास की है एज ए सीक्वेंस। नाउ इट विल क्रिएट अ टपल, डिस्प्ले t, नाउ इट विल क्रिएट अ टपल। बट इसने क्या किया, h को फर्स्ट एलिमेंट बनाया टपल का, e को सेकंड एलिमेंट, एंड दिस प्रोसेस goes to the last element। okay, next one is, if I am passing a tuple then it will create a tuple। ये क्या करेगा, it will make a copy of the same tuple। next, if I am passing a list then it will create a tuple। देखो इसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट जो लिस्ट का वो क्या बना दिया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द tuple, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द list will be the second element of the tuple, and third element of the list will be the third element of the tuple। now I am passing a list, but this time I am giving a list of string hello and welcome। okay, there are two elements in this list। now it will create a tuple having two elements hello and welcome। we complete string को इसने क्या बना दिया, complete one element of the tuple। now complete second element of the list क्या बन गया, complete second element of the tuple। next one is how we can access tuples elements। now we can access the tuple elements through their indexes, and to access the elements of a tuple we can use forward indexing as well as backward indexing। forward indexing starts 0 and up to the length -1, and backward indexing starts from -1 up to the minus length। like strings, if we give index out of range when we access individual elements, then Python will give also raise an index error। okay, this is the syntax of accessing tuple elements। tuple name, then write the index within the square brackets। now ये क्या करेगा, tuple name and square brackets within the index within the square brackets। this syntax क्या करेगा, it is used to access individual elements at the specified index। now next one is, here T is a tuple having some elements BRIGST, 6 characters are there। now to access these 6 characters of a tuple T, we can use forward indexing as well as backward indexing। forward indexing कहाँ से start हो रही है, forward indexing starts from 0 और कहाँ तक चलेगी, up to length -1। लेंथ क्या है बेटे, इस स्ट्रिंग की, इस टपल की लेंथ क्या है, 6। लेंथ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, 6। सो लेंथ इज 6। नाउ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू लेंथ -1। लेंथ -1 दैट इज, ये क्या है, 6 - 1 क्या होगा, देन वी विल गेट 5। नाउ बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1 टू माइनस लेंथ। 6 क्या है, लेंथ है इस टपल की। नाउ माइनस लेंथ, -1, देन -1 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -3 अप टू द -2
length. Now we can access the element B by using both the indexes, forward indexing and backward indexing. When we use forward indexing, then we use index 0, and when we use backward indexing, then we use index -6. You can see here, when I write t of 0, then it will access element B, and when I write t of -6, then it will access element B also. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दिस इज द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड दिस इज द बैकवर्ड इंडेक्सिंग, and we can access element B by using both the indexes. And for the next element R, we can also use both the indexes. By using forward indexing, we use index 1, and when we use backward indexing, we use index -5 to access element R, this one. Okay, now next is, this is the example. Here T is a tuple having 4 elements, 10, 20, 30 and 40. These 4 elements are of integer types. Now T of 2. T of 2 क्या करेगा? It will return the element, it will access the element at the index 2. तो 2 पे हमारा क्या एलिमेंट है? देखो ये इंडेक्स कितना है? 0. This is the index 1, this is index 2 and this is index 3. Index 2 पे क्या वैल्यू है? 30. So it will return 30. Here I am writing T of 4. यानी क्या लिखा हुआ है? I write T of 4 index 4. बट यहाँ पे इंडेक्स 4 नहीं है इस टपल में. इस टपल के लिए जो वैलिड इंडेक्स है वो क्या है? 0 to 3. But here I am giving invalid index, that is index out of bounds. So it will give the index error, tuple index out of range. Let's do practically. Now I am taking T is a tuple having some values. This tuple having 5 values. Now if I am writing T of 3, then it will return, it will access the value 8. At index 3 पे क्या value है? 8. If I am trying to access an element at index 6, but index 6 is not a valid index for this tuple T. So 6 कैसा है? 6 is out of bound index. So it will give the index error, tuple index out of range. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.